morning everyone. Today I'm going to explain you use of is, am, are. So let's just start it. Use of is, am, are. Okay. So first of all we will see singular and plural. Singular means only one thing, one person. Okay, singular means only one. And next is plural. Plural means many. ठीक है, plural means many things or pronoun, एक से ज़्यादा pronoun, like they is also plural, we also plural. So when we talk about many things, then we will say it's plural. Plural means many. Singular means only one thing. Okay. Now we will see singular firstly. Singular pronoun like he, she, it, or any one name. Any one name. Like only Rita, only Rahul, only Tom means one name. Then we will use here is. We will use is. Like he is a doctor. Okay. She is a nurse. It is a cup. Okay. Like Riya is my sister. Riya is my sister. So firstly we will check subject. Subject में हम चेक करेंगे कि हमारा subject singular है या plural है. If our subject is singular, then we will use is. Like he is singular pronoun. यहाँ पे आप लिख सकते हो singular subject, singular pronoun. We will use is. Again she हम girls के लिए use करते हैं. यानी one girl के बारे में हम बोल रहे हैं, then we will also use is. It means एक cow. ठीक है. It के साथ also is. Riya is only one girl, and we will also use here things के लिए हो means only noun use किए हो. Like the tree is very big. Okay, like my school is open. Okay, so here is the tree. Tree is only one. अगर ट्री में एस लगा होता पीछे ट्रीज होते तो वो ज्यादा बन जाते. नाउ ट्री इज ओनली वन, सो वी विल राइट हियर इज. ओके, ट्री इज. नेक्स्ट इज माई स्कूल. स्कूल इज ओनली वन. वी विल ऑल्सो यूज हियर इज बिकॉज यहाँ पे ओनली वन स्कूल की बात हो रही है. अगर स्कूल्स होते तो ज्यादा बन जाते, मैनी बन जाते, बट हियर इज ओनली वन स्कूल. वी विल ऑल्सो यूज हियर इज. नेक्स्ट इज आई. आई के साथ हम ऑलवेज एम का यूज करेंगे. ओके, विद आई वी विल ऑलवेज यूज एम. लाइक आई एम अ गर्ल. ओके, आई एम 7 years old. एक्सेट्रा. सो आई के साथ हमें चेक करना है. फर्स्टली सब्जेक्ट में आई है तो हमने कुछ नहीं सोचना, यहाँ पे कोई कुछ चेक नहीं करना. आई के साथ हम जस्ट देखेंगे कि आई है हमारे सब्जेक्ट में, देन आई के साथ डायरेक्टली वी विल पुट एम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लूरल. प्लूरल में
हमारे पास कौन से प्रोनाउन है, लाइक वी, दे एंड यू और एनी टू नेम। जब भी टू नाउन एंड के साथ कनेक्टेड होते हैं दैट मीन्स दे आर मैनी, लाइक रिया एंड रीटा। See, Riya and Rita. Here are two nouns are there. Two nouns are there, Riya and Rita. It means they are more than one, means two ज़्यादा हो गए, many हो गए. Then we will also use here plural के साथ हमने क्या use करना है अब, are. We use are when we have many things, more than many things. Like we are friends. Okay, we are friends. They are coming. Okay, they are coming. You are a teacher. You are a teacher. Okay, see, here is we are, they are, you are. मीन्स जब हमारे पास चीजें एक से ज्यादा होंगी देन वी विल यूज हेयर आर. हमने जस्ट सब्जेक्ट को चेक करना है. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, एसपी लिख सकते हो आप, सब्जेक्ट प्लूरल देन आर. दे सब्जेक्ट प्लूरल देन आर. हेयर यू प्लूरल कैसे है, देखो हम जब भी किसी के साथ बात करते हैं कहते हैं कि यू कम हियर, यू आर माई फ्रेंड. मीन्स हम अपने आप से तो बात नहीं करते. जब हमारे सामने कोई पर्सन होगा उसको ही हम बोलते हैं ना यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू कम हियर, यू गो देयर. मीन्स टू पर्सन आर टॉकिंग. इट मीन्स ऑल्सो इट विल इंक्लूड इन मैनी. सो वी विल यूज हियर आर, यू आर. So hope so it would be clear to you. Sometime we get like child or children. Child and children, mouse and mice, mouse and mice. So हमने चेक करना है. देखो चाइल्ड हम जब एक बच्चे की बात करेंगे तो इस लगाना है. चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे तो आर लगाना है. ठीक है, चाइल्ड के साथ हम क्या यूज करेंगे इज, चिल्ड्रन के साथ आर. माउस होती है एक, इज. माइस मीन्स बहुत सारे, देन वी विल यूज हियर आल्सो आर. So hope so it would be clear to you. If you have any query then you can send me message, you can drop a message.